solve this problem, tell me which shortcut method is applicable here. Right hand side is sec ax. Which shortcut method is applicable? Yes. Can you use any shortcut method here for evaluation of pi? No, ma'am. No. That's why it is mentioned in the problem. Use the method of variation of parameter to solve the equation. sec ax कौन से भी स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमें VOP मिशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज करनी है. Okay, so check how this problem is solved. Now, just observe the problem carefully. Here, use the method of variation of parameter to solve VOP. This VOP is nothing but variation of parameter method. Okay, so use the method of variation of parameter to solve d square plus a square y. It is equal to sec ax. Okay, means in short we have to use this method variation of parameter to get the complete solution. Okay, and already we have discussed whenever general method is not applicable, always we whenever shortcut methods are not applicable, always we take help of general method or variation of parameter method. Here also you can observe that sec ax, form of sec ax is not identical to any of the 6 standard forms. Okay, जो 6 शॉर्टकट मेथड हमने डिस्कस की है, किसी भी फॉर्म के साथ आप sec ax को अगर कंपेयर करते हो तो ये फॉर्म सिमिलर नहीं है. e to the power ax sin x plus b sin hx plus b x to the power m e to the power ax into b x into v. ये 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स है 6 शॉर्टकट मेथड्स के. आप ऑब्जर्व कर सकते हो राइट हैंड साइड कौन से भी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पे हम जनरल मेथड को मेंशन कुछ किया नहीं है, यहाँ पे VOP मेथड मेंशन की है that we have to use this method for getting the complete solution. Now as usual, check what is the form of our equation. Form of the equation is f of dy is equal to x, and we always know that solution of such kind of equation is complete solution is equal to CF plus DI. Call it as equation number 1. Now here the calculations are almost similar. Complete solution is CF plus PI, means problem is divided into 2 parts. First part calculation of CF, second part calculation of PI. अब PI फाइंड करने के लिए सिर्फ हम अलग मेथड हर प्रॉब्लम में यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द राइट हैंड साइड. तो एज यूजुअल आपको प्रोसीड करना है. As usual, let us try to find out complementary function. Okay, for finding the complementary function, the auxiliary equation is f of t is equal to 0. Okay, but in our equation, auxiliary equation can be written as square plus a square is equal to 0. आप इक्वेशन से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो that f of d is d square plus a square is equal to 0. Now manually you need to calculate the roots, क्योंकि आप कैलकुलेटर में ये इक्वेशन d square plus a square अगर फीड करते हो तो शायद एब्सर्ड रिजल्ट आएगा. तो ये इक्वेशन आपको मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा. As the degree of the equation is 2, you are expecting 2 roots here. Okay, यहाँ पे 2 roots आ जाएंगे. ठीक है, so roots are t is equal to, और if you find it difficult, we will solve it in hell. Directly roots लिखे तो आपको थोड़ा सा difficult लगेगा. So for finding the roots, same equation can be written as t square is equal to minus a square. Okay, t square is equal to minus a square. But you know that if you get d square is equal to minus 1, okay, if d square is equal to minus 1, your roots are d is equal to plus minus sign. If you have d square is equal to minus 4, your roots are d is equal to plus minus 2i. So whenever minus sign is there, you always need the imaginary. Okay, and that's why
d square equal to minus a square is there. Your roots are d is equal to plus minus ia. Okay, so what are the roots? Plus minus ia or plus minus ai. What is the reason? Because if it is d square plus square, रूट्स आपके क्या आते प्लस माइनस ए, लेकिन माइनस वन एडिशनल है माइनस वन. What is under root of minus 1? I. Okay, that's why d square equal to minus a square. This term has d is equal to plus minus ia. You can compare it with standard form. Alpha plus minus I beta. Alpha is 0, nothing is there, means alpha is 0, beta is 1, beta is a. Real part is 0 is a, and that complementary function will take the form e to the power alpha x रहता है. ओके, CF कैसा रहता है? e to the power alpha x, c1 cos beta x plus c2 sin beta x. So it is e to the power alpha, that is e to the power 0x c1 cos beta x plus c2 sin beta x. Okay, and here what is the value of beta? A. So this beta should be replaced by the term a. Okay, so same CF we are going to write down e to the power 0x c1 cos ax plus c2 sin ax. Okay, and in short form this CF can be written as e to the power 0x is e to the power 0, which is 1. E to the power 0x is 1. So you get the term as c1 cos ax plus c2 sin ax. Call it as equation number 1. Okay, call it as equation number 2. In equation 1, complete solution is there. In equation number 2, CF is there. Now next step, we have to find out PI. अब CF के बाद naturally हमें PI find करना है, और PI find करने के लिए हमें variation of parameter method use करनी है. Okay, so check how I use the variation of parameter method. Okay, so PI is to be written with the help of CF. हमें ये हेल्प लेके PI लिखना पड़ता है. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और आपको थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए इजी जाना चाहिए, इसलिए CF फिर से लिखेंगे. CF is C1 cos AX plus C2 sin AX. Okay, and I have already told you that we write down PI with the help of CF itself. Check how we write down PI. The normal formula is actually 1 upon f of the capital X, but in variation of parameter method using CF only, we write down the PI. Okay, so PI is equal to, check what I do. What is CF? C1 cos AX plus C2 sin AX. Okay, what I do? C1 is replaced by U. Okay, cos AX is considered as Y1 plus C2 is replaced with sin AX is considered as Y2. Are you getting this? What is our PI? या फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ध्यान में रखो. In variation of parameter method, we always write down PI as U into Y1 plus P into Y2. What is U? आप देख सकते हो. What is U? C1. C1 is U. What is Y1? Cos AX. What is V? C2. And what is Y2? Sin AX. Okay. So for the Y1 is already known to us. PI is U into Y1 plus V into Y2. Already known to us cos AX. Y2 is already known to us, which is sin AX. Which terms are unknown here? U and V. So now find out the values of U and V. Okay, Y1, Y2 तो पता ही है. अब सिर्फ U और V आप करो. Replace the values of U and V in PI. Result. Okay, so here ये values हम लिख लेंगे. Y1 is equal to, Y1 क्या है? Cos AX and Y2 is equal to sin AX. ठीक है, Y1 cos AX, Y2 sin AX. Okay,
Now, what is our next job? Already we have seen that p into y plus v into y2. Now we need to find out the values of u and v. So write down to find u and v. We have write down the formula for calculation of u. U is equal to minus integration y to x of w. Okay, and v is equal to integration of y1x upon w dx. These formulae you have to remember. What is u? Minus integration of y to x upon the integration of y1 x upon w dk. Now here, which terms are known to you? y2 is known to us. u का जो फॉर्मूला है उसमें y2 हमें पता है. what is y2? sin ax. okay, y2 is sin ax. what is capital X? फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या है? प्रॉब्लम में आप देख सकते हो इट इज sec ax. ओके, सो x को हम sec ax रिप्लेस करेंगे. which term is unknown? w. in short, w is to be calculated. w Wronskian of y1 y2 का है, वो हमें अब कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे भी फॉर कैलकुलेशन ऑफ v, व्हाट इज फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ओवर x अपॉन w dx. y1 is known to us. y1 क्या है? cos x. ओके, हमने cf से ही pi लिखा था, तो y1 क्या है? cos x. कैपिटल X क्या है? sec x. and w still it is to be calculated. Calculation of u and v. Now it is necessary to calculate w. Okay, so I will write down w is equal to w एक डिटर्मिनेंट होता है. वो किस तरीके से लिखना है देखो. फर्स्ट टू इज y1 y2 is corresponding derivatives y dash y2 dash. ओके, इज इट ओके? बहुत सिंपल है w कैलकुलेट करना. डिटर्मिनेंट ऑफ ये 2/2 इसकी ऑर्डर होती है. फर्स्ट रो, सेकेंड रो y1 dash y2 dash. So it is equal to determinant of. Replace. Already we have considered y1 as cos ax. y1 is cos ax. Replace y2. y2 we have considered it as x. Okay, so write down y1 y2. In the second row, we need to write down the corresponding derivative. Derivative of cos x क्या होता है? Derivative of nothing but minus sin ax into ax with respect to x, which is what is derivative of sin ax? Derivative of sin ax is cos ax into derivative of ax with respect to x, which is a. ओके, हमने फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स लिखे. नाउ सिंप्लीफाई. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू डू. into a into cos ax. A is written as it is. Cos ax into cos ax is nothing but cos square x. Okay, minus minus a is there. Sin ax into sin x is nothing but sin square ax. Is it okay? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने किया, बीच का become plus. Now a can be taken common and we are left with cos square ax plus sin square x. Okay. Now sin square ax plus cos square ax, you know that it's 1. So we get Wronskian w is equal to. Okay, so just check whether you have any difficulty up to this part, because next part we are going to write down on the next page. So these steps will be there. So if you want to ask any difficulty up to calculation of w, you can ask. में आई सभी steps? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And you always know that what is cos square theta plus sin square theta? Always it is 1. So angle यहाँ पे be 1. So which term is left? A. In this way, what is the value of Wronskian W? It is equal to A. We are going to continue it on next page.
So we have W is equal to 8. What is the value of constant W? 8. Now, why we have calculated this W? हमने किस लिए calculate किया? Because we need to calculate values of U and V. हमें U and V के values find करनी थी, इसीलिए हमने W calculate किया. So now let us calculate U. Okay, U क्या होता है? ऑलरेडी हमने लास्ट पेज पे दिया है U का. यहाँ पे देखो W minus integration of y2x upon w dx. What is v? Integral of y1x upon w dx. So write down the formula for u. It is minus integration of y2x upon w dx. It is equal to minus integration of. अब y2 क्या है? ऑलरेडी हमने चूज किया था. y2 क्या है? sin ax and y1 क्या है? cos ax. Okay, so y2 is sin ax and y1 is nothing but cos ax. To replace the values, this y2 for calculation of u should be replaced by sin ax, then capital X. हमारे इक्वेशन की राइट हैंड साइड का फंक्शन क्या था? प्रॉब्लम आप ऑब्जर्व करो. इन द गिवन प्रॉब्लम राइट हैंड साइड इज जस्ट टेक ax. ओके, सो रिप्लेस कैपिटल X is equal to sec ax divided by Wronskian W, and Wronskian W is nothing but a. ओके, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin ax upon a. Okay, this sec ax can be written. Sec ax can be written as 1 upon cos ax. Okay, dx. Now minus 1 by a. A is constant. It can be taken outside. So I can write down the term as minus 1 by a. Now which terms are left? Sin ax upon cos ax. Sin ax upon cos ax can be written as tan x dx. Normal integration बहुत सिंपल है. So it is equal to minus 1 by a. What is integration of tan ax dx? आपको पता है integration of tan x क्या होता है? Log of sec x. Integration of tan x is log of sec x. So what is integration of tan ax? Log of sec ax divided by derivative of ax with respect to x, which is a. Okay, and finally you get the value of u as minus 1 by a square sec ax. What is the value of u? Minus 1 by a square log of sec ax. Now the next step is to calculate the value of v. Now next step is to calculate v. v का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? इंटीग्रेशन ऑफ y1x अपॉन w dx. रिप्लेस द वैल्यूज. इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज y1? प्रॉब्लम में हमने ऑलरेडी y1 क्या कंसीडर किया था? cos ax. ओके, आप देख सकते हो CF हमने PI लिखा था. ऊपर की स्टेप देखो यहाँ पे. CF is C1 cos AX plus C2 sin AX. That's why cos AX is considered as Y1 and sin AX is considered as Y2. Okay, हम CF और PI के फॉर्म को कंपेयर करते हैं और Y1 Y2 की वैल्यू डिसाइड. और जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट आपको ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, so y1 is nothing but cos ax. Again, function on the right hand side of the equation is nothing but sec ax divided by w. W is a. Integrate the term with respect to x. It is integration ax. Into sec ax. Sec ax is nothing but 1 upon cos ax. 1 by a is there, it can be taken common dx. Is it okay? 1 by a is taken common. Cos ax is written as it is. Sec ax is 1 upon cos ax. Now cos ax get cancelled. It is 1 upon a.
Integration of dx is nothing but x. You get the value of v at x by a. Check. What is the value of u? U की वैल्यू क्या है? -1/a² log of sec ax. v की वैल्यू क्या है? x by a. And that's why pi का फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखो. वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में it is u into y1 plus v into y2. ये वैल्यूज अब रिप्लेस करो. pi is equal to u की वैल्यू रिप्लेस करो. What is it? -1/a² log of sec ax, okay, into y1. And what is my y1? y1 की वैल्यू क्या थी? cos ax plus v into y2. v is what? v is x upon a. And what is my y2? y2 की वैल्यू ये है sin ax. In this way we have written our pi. And finally, complete solution is the CF plus PI. CF की वैल्यू रिप्लेस करो. CF की वैल्यू क्या थी? C1 cos AX plus C2 sin AX plus PI, that is -1/a² log of sec AX into cos AX plus x upon A into sin ax. Okay, in this way we use the variation of parameter method. So is there any difficulty in this problem? No, ma'am. Yes. Calculation of u, calculation of v, calculation of w समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Now let us consider the second problem. Actually, this is homework for you. Just I will provide the structure, the formulae which you have to use for calculation of PI. As usual, we are going to solve this problem. Complete solution is CF plus PI. After calculation of CF, its form will be like C1 cos X plus C2 sin X. Now, after getting CF, our next job is to find out PI. And I have already told you that calculation of PI in variation of parameter method is done with the help of CF itself. हम CF की हेल्प लेके ही PI लिखते हैं. और कैसे लिखते हैं? PI का फॉर्म हमेशा सेम होता है. What is the form of PI in variation of parameter method? U into y1 plus v into y2. PI is u into y1 plus v into y2. अब कंपेयर करो. व्हाट इज y1? c1 को हम u से रिप्लेस करते हैं. मींस एक्चुअली हम यहाँ पे पैरामीटर को वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हैं. c1 पैरामीटर था, उसे हम वेरिएबल u से रिप्लेस कर रहे हैं. c2 भी पैरामीटर था, उसे हम वेरिएबल v से रिप्लेस कर रहे हैं. इसलिए इस मेथड को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड बोलते हैं. is replaced by u. What is our y1? y1 की वैल्यू क्या है? cos x. c2 is replaced by v. And what is the value of y2? sin x. So just down here, y1 is equal to cos x and y2 is equal to sin x. हम CF को कंपेयर करके ही ये करेंगे. y1 is cos x and y2 is sin x. For writing this PI y1 y2 हमें पता है. कौन सी टर्म्स अभी अननोन है? u and v. So next step is to calculate u and v. Okay, और u and v कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है उस फॉर्मूले में w की टर्म होती है. So we must calculate w first. So write down w is equal to, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड होता है y1 y2 फर्स्ट रो, सेकेंड रो y1 डैश y2 डैश. लास्ट प्रॉब्लम में हमने यही किया था. ओके, आई एम कंटिन्यूइंग दिस ऑन द सेकेंड राइट हैंड साइड. सो w is equal to determinant of replace y1. y1 is cos x. Replace y2. y2 is sin x. In the second row, we need to write down the derivatives.
Derivative of cos x is nothing but minus sin. Derivative of sin x is nothing but cos x. Okay, cross multiplication. Cos x into cos x is a cos square x. यहाँ पे sin x into minus sin x है, बीच में निगेटिव साइन होता है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड sin x into sin x square x, and we always know that sin square x cos square x is always W की हमें 1 मिल गई है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मुझे u कैलकुलेट करना है. u है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2x on w dx. फॉर्मूला सिर्फ आप ध्यान में रखो, रिप्लेस करो उस वैल्यू. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 क्या है, ऑलरेडी मैंने चूज किया था. व्हाट इज y2 sin x, रिप्लेस y2 एज sin x. व्हाट इज कैपिटल x, फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या है, cosec x. x should be replaced by the term cosec x and Wronski and w is 1. नहीं लिखा तो भी चलेगा, Wronski and w is 1. अब cosec x को आप 1 upon sin x लिख सकते हो. What is upon sin x? sin x कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा आपका x. तो u की वैल्यू एक्चुअली माइनस x आएगी. टेक इट एज होमवर्क, फर्दर कैलकुलेशंस आप करो. u की वैल्यू आपकी आनी चाहिए माइनस x. दिस इज होमवर्क फॉर यू. ठीक है, नाउ v का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ y1x अपॉन w dx. रिप्लेस करो वैल्यूज, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज y1 की वैल्यू cos x है, w की वैल्यू 1 है, और ये कैपिटल x की वैल्यू क्या है, cos x. इंटीग्रेट द टर्म विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे फिर से cosec x को रिप्लेस करो 1 अपॉन sin x से, cos x अपॉन sin x cot x हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log ऑफ sin x. इस तरीके से आपको v की वैल्यू log ऑफ sin x. अब आपको u की वैल्यू माइनस x है, v की वैल्यू log ऑफ sin x है. दोनों वैल्यूज पता है, ये दोनों वैल्यूज आप pi में रिप्लेस करो. pi क्या है, u इंटू y1 प्लस v इंटू y2. u की वैल्यू प्लस करो, v की वैल्यू पता ही है, y1 cos x है, y2 पता है sin x. रिप्लेस करो, गेट pi मिल गया, प्लस pi इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन. सो क्या करना प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट जो था, how to calculate u and v, I have already mentioned here. So if you have any doubt you can ask, otherwise you may leave classroom. मैम Yes. मैम आपने जो शॉर्टकट मेथड के मैम नोट्स शेयर किए ना मैम, हाँ, उसमें सिर्फ मैम 3 प्रॉब्लम मैम, बाकी केस पे नहीं है मैम. नहीं वो शेयर करने वाली हूँ मैं, वो पूरा नहीं है क्योंकि मैंने इतना उतना ही पोर्शन हुआ था, तो पूरे नोट्स मैं आपको भेज दूंगी. ये यूनिट सिर्फ खत्म हो जाने दो आप, क्योंकि वो पीडीएफ है, उसमें पूरा वीओपी, लेजेंड्रेज, कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी प्रॉब्लम्स है, तो वो मैं एक साथ भेज दूंगी आप लोगों को.